everyone and welcome to the family of Pathfinder Defense Academy. My name is Dr. Mansi Mishra and today I am here and I am very glad to introduce Abhishek Mishra to you because this is the student who has cleared AFCAT, that is AFCAT exam, right? AFCAT एग्ज़ाम फॉर द 2022. सो ये हमारे साथ आज हैं जो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और हमें बताएंगे कि कैसे हाउ ही हैज़ मैनेज्ड ऑल द थिंग्स, हिज प्रिपरेशन, हिज सक्सेस स्टोरी, his obstacles in the preparation journey. Everything will be discussed today. So I hope you all will take some motivation from him and you will be the part of his success story. So hello Abhishek, सबसे पहले तो I want to congratulate you and your family. A very big congratulations to everyone. And हमें भी भाई थोड़ी तो बधाइयाँ हमें भी मिलनी चाहिए. He is the part of our family. Pathfinder Defense Academy का एक बहुत important part है अभिषेक. तो थोड़ा बहुत तो क्रेडिट हमें भी बनता है क्या नहीं अभिषेक? बिल्कुल मैम, क्रेडिट तो बनता है. चलो तो थोड़ा बहुत क्रेडिट तो अभिषेक ने भी दे ही दिया है. अब आगे डिस्कस करते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही. सो अभिषेक, फर्स्ट आई वांट कि आप हमें बताएं हाउ यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन और उससे भी पहले व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट, कि जो पैशन है टू सर्व इन द इंडियन आर्म फोर्सेस कैसे आया, हाउ यू हैव डिसाइडेड, व्हाट वाज द डे व्हेन यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू सर्व द इंडियन डिफेंस फोर्सेस? My name is Abhishek Mishra and I'm the only child of my parents. My father has served in Indian Army and my family, many people are there who have served in Indian Armed Forces, and my grandfather was also in Indian Army. The motivation to join Indian Armed Forces was when I was a kid. There is a very anecdote that I would like to share. There was a winter season and I was on winter vacation and my father was getting ready for his job, and while that there was a jacket, that combat jacket is there of Indian Armed Forces. So I wore that jacket and that wasn't fitting me because I was in 7th or 6th standard at that time, and I just went to my father's room and I just said him, hello, good morning, and he was like, why are you wearing this uniform? So that was the moment I felt confident. I was just a kid and it just gave me the whole different feeling, and that was the day I decided that I'll be joining Indian Defence Services. And when I was in my graduation, I thought I should start preparing for it with like dedication, and then there was a COVID pandemic and I started my preparation that time. And Indian Air Force, I cleared this exam and it is going to be a great opportunity for me to serve Indian country. That's the best I can do for the nation. Okay. So इनका मोटिवेशन आया एक कॉम्बैट जैकेट से. आपको पता है कि आपका मोटिवेशन क्या है? अगर आपने डिसाइड किया है कि हमें भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना है, उसका एक पार्ट बनना है, तो कैन यू टेल कि व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड इट? आप अपना मोटिवेशन खोजिए, तब तक हम अभिषेक से कुछ और बातें करते हैं. ओके अभिषेक, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल का होना ज़रूरी है. आपका एक टाइम टेबल क्या था, कैसे आपने अपने डे को मैनेज किया? आपने भी बताया कि इट वाज द टाइम ऑफ पैंडमिक, तो चीज़ें आपने तब कैसे मैनेज करी? अभी क्या सिचुएशन है? व्हाट वाज द सीन एट द टाइम? How the table has turned, because pandemic was a very serious time and no one has faced such a situation earlier. तो what was the time कि आप कैसे मैनेज करते थे? How you have managed everything during the online classes, during the offline sessions? कैसे आपने अपनी सारी चीज़ों को मैनेज किया? During the pandemic, I would say that most of us became a little lazy. So we were not able to keep record of time as well as not able to follow our any timetable. But as much as I can, I was able to do it. At that time, I didn't clear my exam because there was a lack of guidance, as well as I wasn't aware of how much to study and what to study.
That's the very important thing. When you know something, you know the path, then it's easier to walk on it. So that path is very important, and for that path you need guidance from the people, those who are experienced, and in those particular circumstances, my faculties and teachers have helped me a lot. And timetable is I was very scared of mathematics since my childhood, so that was the subject that I decided to give maximum time. That was the thing that I did, and I was like, I'll be able to divide the remaining time in other subjects, but I'll give my most of the subject to the time to the subject mathematics. But that didn't yield me the result. Then that was the time, and then got to know that it's better to work on something that you know and make it perfect. Yeah, it's mathematics is important, and I gave it its respected time and got the result of it, and that's how I able to clear the examination this time. Phobia is also very important in the part फॉर प्रिपेयरिंग एनी एग्जाम, बिकॉज पुरानी कहावत है ना हिंदी में कि बिन भय होए न प्रीति. अब अगर आपको पता नहीं होता कि यू आर हैविंग द फोबिया ऑफ मैथमेटिक्स, तो यू आर नॉट गिविंग सच टाइम और यू आर नॉट focusing so much on it, because if you are knowing your phobia na, then you are focusing on it a little bit more, right Abhishek? So to have phobia or fear something that is very important. अगर आपके अंदर किसी चीज़ का डर है ना, तो उसी डर से तो हमें लड़ने का काम करना है, राइट? और अभिषेक ने ये किया, और इसी वजह से लाइक अभिषेक ने कहा मैथ्स वाज हिज वीक पार्ट, वीक पोर्शन, राइट? और इन्होंने अब बताया कि प्रॉपर टाइम टेबल होना कैसे इम्पॉर्टेंट है. हर एक इंसान को अपनी वीकनेस का आइडिया होना चाहिए. आप सक्सेस के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं जब आप अपनी वीकनेस को खुद पहचान लेते हैं. वीकनेस होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट what you have to do, you have to identify your weakness, your weak areas, and you have to work on them. Everyone has some weakness, and what you have to do, you have to identify, you have to mark it, and you have to work on it. अगर आप उस पर काम करना शुरू करोगे तो एटलीस्ट एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि आप खुद में इम्प्रूवमेंट महसूस करोगे. अभिषेक ने बताया कि उनका वीक पार्ट था, उनकी जो वीकनेस थी वो मैथमेटिक्स थी. तो कैसे आपने अपनी इस वीकनेस को दूर करने की कोशिश की? व्हाट वाज द नंबर ऑफ आवर्स व्हिच यू हैव गिवन फॉर द प्रिपरेशन? Earlier, till my 12th, I used to avoid mathematics. I used to give the least time. I'll just study for the examination. I wasn't curious or excited to study mathematics. But in the end, it is like the thing that you are afraid of most, you have to face it, then only you can move ahead. That's what the thing that happened to me. Then I allotted 2 hours to mathematics and started with the basic mathematics, and I was not able to solve normal sums, and that was very demotivating. But I was like, this is the time that I can give my best, because if it's not there, then I'll not be able to achieve my dream. And when something is becoming an obstacle for your dream, that's the time you just overcome it. And that's what happened with me and my faculty, Mr. Amit sir. He helped me a lot. His way of teaching is so good that I started loving mathematics. I would not say that I'm still the perfect in mathematics, but still I am a lot better than what I was yesterday. So that's what I would just like to say about the mathematics. Okay, so this is the important thing which Abhishek has just mentioned, कि your next day should be better from the previous one, because at the end slow and steady wins the race. बहुत पुरानी फ्रेज है, सबने सुन रखी है कि लास्ट में जीतता वही है जो धीरे धीरे चल के अपने एम को अचीव कर ले, अपने गोल तक पहुंच जाए, फिनिश लाइन तक पहुंच जाए. तो अभिषेक ने भी कुछ ऐसा ही किया. हालांकि इन्हें डर था, लेकिन अमित सर का नाम इन्होंने लिया, बहुत ज़्यादा मदद करी, और चेहरे की मुस्कुराहट तो बता रही है कि अमित सर ने क्या ही इम्पैक्ट डाला होगा इनका. अमित सर ने इनकी दोस्ती कराई मैथमेटिक्स से, और धीरे धीरे इनका जो डर था वो कम हुआ, और इन्होंने अपने वीक एरिया पे काम करना शुरू किया. इसी तरह आप सब भी पहचानिए कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, और उन पर आज से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए. बिकॉज आज एक हमारे पास यहाँ पर सक्सेस के एग्जाम्पल के तौर पे अभिषेक आपके सामने हैं.
नेक्स्ट आप भी हमारे सामने यहाँ बैठे हो सकते हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अभिषेक से। अभी तो इन्होंने बताया कि इनके फियर्स क्या थे और इन्होंने कैसे चीज़ों को मेंटेन किया, कैसे मैथ्स में इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को दूर किया, कैसे उससे दोस्ती करी। आप जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपना पूरा दिन स्ट्रक्चर किया, इसके बाद कैसे इनका सिलेबस कवर कराया हमारे बाकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स ने। और जैसे आप सभी को पता है कि वी आर एट आलमबाग एंड इंदिरा नगर, दोनों ही जगह ब्रांचेस है, तो ये कहाँ पर जाते थे, कैसे ऑनलाइन चीज़ों में करते थे, कैसे ऑफलाइन में चीज़ों को मेंशन करते थे, कैसे मैनेज करते थे सारी चीज़ों को बेसिकली। When I was preparing during the lockdown, that time I was just sitting at home and have had ample amount of time to prepare for my examination. But as I have earlier mentioned, that there was a lack of guidance. I was not able to decide what to study and how much to study. So that was the biggest issue that I faced when I was studying on my own. But later on, when the things got normal gradually and our things started getting opened up, I joined my masters, and while I'm there in the morning, in the evening I have to come for my coaching, and here my faculties have told me and guided me what and how much to study, and they've helped me a lot because that was the issue that I was facing. Like if I'm studying something and I'm liking it, I'm going into the depth of it, and irrespective of how much time I'm spending on the particular topic, and in that particular scenario I was missing out on the important topics that must be covered for clearing examination. So that guidance and putting me in a precise environment, that was the important thing that I got to know from the faculties, and our faculties are great. They know actually how to teach every individual. Even they teach us in a collective form, but they know how much a person can grasp. So that's the best thing that I would like to say about my teachers, and hopefully everyone should get a faculty like I have been blessed with. That's what I'm saying. अभिषेक ने फैकल्टी के बारे में तो बता ही दिया। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिलेबस के साथ दोस्ती तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन ही उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक इंसान के एग्ज़ाम के क्लियर करने के जो सक्सेस स्टोरी होती है ना उसमें। तो अभी तक तो हमने बात करी कि कैसे इन्होंने चीज़ों को, सिलेबस को कवर किया। अब पूछ लेते हैं फाइनली कि रिवीजन कैसे इन्होंने किया, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, जो एकेडमी ने टेस्ट प्रोवाइड कराती थी ये टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते थे, कैसे क्वेश्चंस को वहाँ अटेम्प्ट करते थे। बहुत कम शब्दों में हम थोड़ा सा अभिषेक के साथ जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि रिवीजन कैसे किया इन्होंने। Revision is an important part because earlier I used to think that we can learn as much as we should learn as much as we can, and I was just behind everything, learning something new every day and not able to recall whatever I have studied like 10 days back. So that wasn't helping. So that's the time I got to know that revision is important, because by just learning something new I wasn't getting the results. But this time I was able to finish my curriculum on time, and then I was able to give ample amount of time for the revision, and that's what have helped me to improve my score this time. And examinations practice is very important. Like in our academy we are offered on every Saturday we are offered examinations in the time constraint, and in which we feel like we are writing our real examination. So that's the experience that we need while we are entering for our final exam, because no matter how much you are prepared or talented you are, if you have not got into the practice ground, I don't think so you'll be able to perform in the final exam or anything. Of final performance is important, because that's what the thing is that comes under notice. Your practice or hard work, nobody sees that. That's all behind the scenes. So to reveal that, first we have to put something in front of others to acknowledge and know. So that's how I would say that revision is a key. So better have it. चलिए, तो आप सभी ने देखा कि अभिषेक ने अपने एक्सपीरियंस को कैसे हमारे साथ शेयर किया।
कैसे अभिषेक ने बताया कि इनका जो एक आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करने के लिए जो एक पैशन था इनके मन में, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे इन्होंने अपने सिलेबस को कवर किया और फिर रिवीजन तक का सफ़र। आगे भी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं और अब इन्हें AFSB फेस करनी है, तो उसकी प्रिपरेशन भी इन्हें डबल करनी पड़ेगी, राइट अभिषेक? As I've taken my first step, I hopefully I'll be able to complete the race this time and be joining the Indian Air Force soon. अभिषेक आ रहे हैं यहाँ पे, AFSB क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। SSB में हमारी प्रैक्टिस, हमारे जो भी यहाँ पर रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो इन्हें सिखाते ही हैं। बाकी अभिषेक की स्टोरी से हमने जाना कि पैशन होना अपने एम को पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल ही जाती है। सो आई होप कि आप सभी अभिषेक की स्टोरी से कुछ ना कुछ मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे, और नेक्स्ट टाइम मेरे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैं इंटरव्यू ले रही होंगी। तो फॉर टिल देन थैंक यू वेरी मच कि आप सभी हमारे साथ इस थोड़े से टाइम का ही सही लेकिन अभिषेक की सक्सेस स्टोरी का पार्ट बने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अभिषेक एंड विश यू लक।